हाय गाइस, आई एम रायरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। उधर बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं इधर आ गई। सो आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे और मेरी नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिर मैं जाने वाली हूँ, मेरी एक दोस्त, मेरी दीदी है, वो मेरे पड़ोसी है, तो उनके घर में, बिकॉज कल है उनकी एंगेजमेंट और आज तैयारी करनी है। तो मैं उनकी मेकअप कर रही हूँ और उनके मेहंदी भी मैं ही लगाने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, अभी मेहंदी लगाने जा रही हूँ। आई होप आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। कल एंगेजमेंट के लिए जो मैं पहनने वाली हूँ, तो वो मैं ये पुराना से 7 साल पुराना ये साड़ी है जो मम्मी ने मेरे मम्मा को शगुन पे दी थी शादी की। तो ये उन्होंने ऐसे रख दिया था, बहुत ही प्यारा सा साड़ी है। इसमें इतना सारा एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है, ये देखिए। इन सबको मैं निकाल लेने वाली हूँ या फिर मैं इसे कट करूँगी और ये सब मैं निकाल लूँगी। और मैं नेट का कपड़ा लेके आई हूँ ताकि मैं इसका पल्लू बना सकूँ, बिकॉज ये काटूँगी तो शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इससे मैं थोड़ा सा लंबा कर लूँगी और एक नया स्टाइल भी आ जाएगा। एंड हर त्यौहार के लिए, हर शादी के लिए मैं इतने सारे कपड़े नहीं खरीद सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रिक्रिएट करके इसे मैं कैसे स्टाइल करूँगी ये मैं आपको कल दिखाऊँगी। कुछ में सेजवान चटनी और ये सीज़ और ये मेयोनीज़ और ये जो रियल, ये सब मैं कुछ लेके आई हूँ। अब इससे मैं बनाती हूँ। और चिकन को मैंने कढ़ाई पे रख दिया है। मैंने अभी इसे बना लिया है और इसके अंदर मैंने डाला है ढेर सारा चीज़ और चिकन और वेजिटेबल्स। एंड एकदम पूरा फॉग से भरा हुआ है। गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुका है और आज है एंगेजमेंट, तो मुझे बहुत ही जल्दी उठना पड़ा। वैसे तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत ठंड तो नहीं है, बट स्टिल ठंड है, तो गर्म पानी की ज़रूरत होगी। तो गर्म पानी से नहा के आती हूँ और फिर दुल्हन को कॉल करते हैं ताकि वो मेरे घर आ सके मेकअप करने के लिए। सो हियर इज़ द ब्राइड। हमें मिल गया रॉयल पैलेस। सो आते ही ये लोग सेल्फी पे लग गए और ये रही दुल्हन जिसे मैंने मेकअप की थी। Say hi. Say hi. Say hi बोले। ये देखो, फोटोग्राफर दुल्हन को डांट रहा है, वो स्माइल नहीं करता। ओके ओके, तो अभी फ़ोटो खींच रहा है।
चेंज करेंगे जो दूल्हे की तरफ से आया है। दे आर क्लिकिंग फ़ोटो। सो हम लोग आए यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने, लिटिल विथ फ़ोटो सेशन। तो हम लोग आए हैं थोड़ा दूर वेन्यू से फ़ोटो खिंचाने और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। Now we are going back home. Bye bye. एंगेजमेंट से आ चुकी हूँ और अभी मैं शादी पे जाने वाली हूँ। पास में एक और शादी है तो वहाँ पे जाने वाली हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ और मामा को दिखाती हूँ मैं। से हाय। सो या तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगर आपने इस ब्लॉग को एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।